that patience and knowledge, and the willpower to never give up. That are the main things that that any entrepreneur should have. The risk, the will to take risk and have the gut power and to never give up. That is one of the things that will make you succeed. With time, it will take time, but it will make you succeed. Hi and welcome to Startup Story Spotlight, a series where we feature various early-stage innovative founders and discuss about their business, its working and functioning. In today's episode of Spotlight, we have the founders from Golechha Bioscience Pvt, a leading manufacturer of nutritional health, gym, nutraceuticals and other related food supplements. We have with us Rajkumar Golechha, managerial director, Ronak Golechha, and Nikhil, technical and marketing CEO. Hello, sir. How are you doing? Fine. Hi, sir. Fine, madam. It's great to have you, sir. So I'd like to start with you, sir, to know कि आपकी जर्नी कैसी रही है इस कंपनी के साथ और इस कंपनी को शुरू करने से पहले आप क्या करते थे और what led to you to this company? Company start 2014. मेरा जर्नी near about 40 years business का है. I'm working in pharmaceutical last 40 years. मैं एक छोटे शहर से हूँ. एक छोटा शॉप लेके हमने स्टार्ट किया था मेडिकल का. आज हमारी 3 ब्रांचेस मेडिकल की है और हमारी कंपनी ने 2014 में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का काम स्टार्ट किया. आज 10 साल पूर्ण हो गए और इसके मेरे ब्रदर जो दिलीप कुमार गोलछा है, उनका ड्रीम था कि ये कंपनी स्टार्ट की जाए. उनके ड्रीम के अनुसार ये कंपनी का वर्क चल रहा है. हम अभी यूएस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑल इंडिया सभी जगह माल भेजते हैं. हमारा विजन है कि इस कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है और आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ाना है और जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे. मेरे साथ मेरी सारी टीम है. एक डॉक्टर है, एक पीएचडी है, एक इंजीनियर है, एक सीए है. ऐसे हम 4-5 डायरेक्टर है और बाकी स्टाफ है 40-50 लोगों का. वर्क अपने छोटे से एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट था प्योर कोको, जो नारियल पानी पाउडर फॉर्म में बनता है, जिसकी हमारे पास वर्ल्ड वाइड हमारा पेटेंट है उस प्रोडक्ट के ऊपर में. उसको हमने 13 अलग अलग फ्लेवर में बनाया है. सारे नेचुरल है. यूएस, कनाडा में उसको पास किया हुआ है. यूएस में हमारे पास लाइसेंस है. कनाडा में भी हमने माल सप्लाई किया है प्योर कोको की हमारे पास में बहुत अच्छी डिमांड है. ये हमारा एक ब्रांड है. बाकी हम टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पाउडर, ऐसे न्यूट्रिशन सारे सप्लीमेंट इसमें प्रोटीन वगैरह सब आता है, वो चीजें हम बनाते हैं और सब जगह सप्लाई करते हैं. अभी मैं कंपनी के एमडी की पोस्ट पे हूँ और कंपनी ग्रो कर रही है. अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है. हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स है और वर्क अच्छा चल रहा है. That's great to know, sir. और जैसा आपने कहा कि कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी और अभी 10 साल होने जा रहा है कंपनी को. तो इन 10 साल में कंपनी कैसे ग्रो हुई है और आपने इस जर्नी से आपने क्या क्या सीखा है, ये आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें तो. ये कंपनी 2014 में एक प्रोडक्ट लेके स्टार्ट हुई थी प्योर कोको, जिसे नारियल पानी पाउडर फॉर्म में कहते हैं. तो स्टार्टिंग में हमने कुछ प्रॉब्लम था. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम था, छोटा गांव रहने की वजह से. पर हमने धीरे धीरे डेवलप करते करते आज 350 प्लस प्रोडक्ट हम बना रहे हैं. और मैं पहले बिजनेसमैन से एकदम मैन्युफैक्चरिंग में आया. मुझे सीखने समझने को टाइम लगा, पर मेरा ग्रैस्पिंग पावर अच्छा रहने से और मेरा नॉलेज इंटरेस्ट ज़्यादा रहने से मैंने बहुत जल्दी इसको पिक कर लिया. आज सारा मैनेजमेंट हम 4 डायरेक्टर देखते हैं और आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है न्यूट्रिशन के अंदर में. वर्ल्ड वाइड अच्छा बिजनेस है. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. So the question for you, Nikhil sir, is कि इस कंपनी के पोटेंशियल कस्टमर्स कौन-कौन है और ये कंपनी अपनी तरफ अपने कंज्यूमर्स को कैसे ड्राइव करता है अपने प्रोडक्ट्स की तरफ. बेसिकली मैडम, न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है. वर्ल्ड वाइड ये ग्रो कर रहा है और काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है फार्मा के सेगमेंट में. और हमारी बेसिकली हमारी यूएसपी ये है कि हम
from concept to manufacturing, each and everything we are providing on one stop. So you can consider us as one stop solution for everything in nutraceutical as well as pharmaceutical, but right now majorly focus on nutraceutical because करीब 10 साल हो चुके हैं इस कंपनी को मैन्युफैक्चर करते करते न्यूट्रास्यूटिकल में. तो जब हमने शुरू किया था तो जस्ट इंडिया में ये ट्रेंड शुरू हुआ था फार्मा को न्यूट्रा का सेगमेंट अलग करने का, एंड दैट टाइम वी एंटर इन दिस बिजनेस. सो वी आर वन ऑफ द पायनियर इन दिस सेगमेंट. तो आज उस रीजन से हमने काफी काम किया है और महाराष्ट्र लेवल पे भी हमने बहुत अच्छा काम किया है. और हमने जब स्टार्ट किया था वी आर द ओनली कंपनी हु स्टार्टेड इन न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट टाइम. सो हमारे रीजन में सेंट्रल इंडिया में वी आर हैविंग लार्जेस्ट कैपेसिटी एज ऑफ नाउ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. सबसे बड़ा प्लांट है, तो ये भी एक यूएसपी है हमारी. और पूरी की पूरी डोजेस फॉर्म हम बना रहे हैं, पाउडर, ग्रैन्यूल, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप. सो एक वाइड एंड कंप्लीट रेंज मिल जाती है कस्टमर को, ये भी एक यूएसपी हो जाती है. तो इस तरीके से हमारा एक काफी बड़ा सेगमेंट और काफी सारे कस्टमर हमसे जुड़े हैं. तो 4 सेगमेंट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं आप कि गवर्नमेंट सप्लाई भी है, खुद के ब्रांड्स का भी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी है और एक्सपोर्ट्स भी है. मेजरली हमारे ब्रांड हम एक्सपोर्ट में ही प्रमोट करते हैं और करीब करीब अभी 27 कंट्रीज के हमारे अप्रूवल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इवन म्यांमार. ऐसे बहुत से देशों के हमारे अप्रूवल्स हो चुके हैं और करीब करीब अराउंड 400 प्रोडक्ट अभी हम बना रहे हैं. तो एक आपके लिए भी और एक हमारे कस्टमर क्लाइंट के लिए भी एक बहुत बड़ा वाइड रेंज मिल जाता है. इसके साथ साथ मेरा खुद का फार्मा में पीएचडी है. तो हमने जब शुरू किया था तो एक विजन था उसके पीछे. विजन मेरे बड़े मामा जी का था, जो दिलीप कुमार जी गोलछा, जो अभी हमारे बीच नहीं है, पर ये शुरुआत उन्होंने की थी. उनका ये थॉट था कि हम ट्रेडर से मैन्युफैक्चर बने, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी टीम है, उतनी काबिलियत है. और जब हम उतनी काबिलियत रखते हैं तो हम लोगों तक वो चीज़ों को पहुंचा भी सकते हैं. तो मेरा फार्मा में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, करीब 1000 प्रोडक्ट डेवलप करने का एक्सपीरियंस हो चुका है. तो ऐसे करके डेवलपमेंट पार्ट मैंने संभाला और ये जर्नी 2013 में शुरू की दिलीप कुमार जी गोलछा ने. उनका ये ड्रीम था और हम ये सब उनका ड्रीम पूरा करने के लिए काम कर. That's great to know, sir. और एक बार अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए ये डिफाइन कर सके न्यूट्रास्यूटिकल्स एग्जैक्टली होता क्या है और गोलेचा इसमें एग्जैक्टली कर क्या रही है? न्यूट्रास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल का ही सेगमेंट बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट अ फूड completely or not completely medicine. It's in between food and medicine. So it is nutraceutical, means the nutrition supplement which require for the body to avoid the diseases or to fight for the diseases. So that is the part we are playing a major role. So in this we will manufacture and product lots of products. For example, protein powder, different types of protein powder for different types of micro conditions, like especially for kidney patients, especially for diabetic patients. So that is the micro specialization we can do. Second thing, lots of vitamins, minerals, that is the need of body, immunity boosters, amino acids, gene supplements. All this requires nutrition. Basically, drug is the secondary part which require during the disease, but nutrition is the common part which require with the disease, without the disease. Because nutrition gives you basic the protein requirement, the amino acid requirement, the cell growth. So overall, if you are in disease condition, then it is still you require the nutrition, and if it is not in the disease condition, to maintain the life, you require the nutrition. So it is a very big segment, and what is the we are doing. राइट सर. और जैसे आपने मेंशन करा आपका ट्रेडर से लेके मैन्युफैक्चरर तक का जर्नी, और आपने यू स्टार्टेड विद अ कोकोनट प्रोडक्ट एंड नाउ देयर आर 400 प्लस प्रोडक्ट्स दैट यू आर एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड. व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड द कंपनी फेस ड्यूरिंग दिस जर्नी, एंड आल्सो द कोविड हिट in 2019 during this journey, so how did that affect you? Very good question. Actually, we think COVID is actually the biggest opportunity for nutraceutical industry. And people also realize the importance of nutrition in their life, rather than just saying it is a required part.
and lots of challenges we faced during our startup. So first we face related to challenges related to licensing part, challenges related to staff management, because we are in the remote location. Inganghat is a not well-known place in the country, very small town. It's near to Nagpur. So you will not find skilled workers or labor here. So we train them, we manage them, we teach them. So we have done each and everything from the bootstrap, from the scratch. So it takes some time, but eventually we grown, and we grown up to the level of 10 years. So we will be there for a long time in market. In this COVID, actually lots of opportunity we encash also. So lots of approval we got, lots of product we export. So everything is going fine, and this gives a booster dose for the nutraceutical industry. I can say like that. Right, so and it makes sense. COVID did act like a boon to a lot of companies जो digitally grow करना चाह रही थी. वो बहुत अच्छा काम किया COVID ने उनके लिए, because it gave the companies to grow, and it gave the company the space and the time to grow. So yes, that was one good thing that happened. Right, बिल्कुल. मैं इसमें एक पॉइंट जरूर जोड़ना चाहूँगा. Sure. कि बेसिकली अभी ये 10 साल की जर्नी मेजरली ऑन द ऑफलाइन है, मतलब ऑनलाइन नहीं हुए अभी हम, लेकिन दिस 10 years के बाद हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन पे भी फोकस करेंगे, एंड वी विल गो डिजिटली इन अ बिग वे. This is our also a vision, a short-term goal, I can say, rather than a big goal. And one of the short-term goal is this only. Thank you. Yeah, thank you so much. Hello, ma'am. Hello, sir. How are you doing? I'm fine. How are you? Okay, I'm perfect. Okay, for you, sir, my question is that where do you see the company growing in the next 4-5 years, and what goals do you have for the company? One of the biggest goals, as the other founders said, is to be one of the leading companies in the nutraceutical market in India. We have done the journey of 10 years of growing, and now it's a chance to we have the chance to grow exponentially, as we had done the journey which is required for any startup for sustaining. Now it's chance to growing. So the major goal is to become one of the biggest nutraceutical industry in India. Next is, as we have done in the B2B market, as we have said, so one of the next goal is to be one of the companies who is exporting to other countries also in major components, to be a multinational level company. As we have done exports to some 3-4 countries, we want to expand it to more countries and to have a worldwide presence. And next, we also want to enter as the we also want to enter our own brands in the market, and we want to make them shine and compete with the others big firms. Right, sir. So this journey that you've said, how do you plan on going forward with it? What does the plan and the process look like? The next plan is, as Nikhil sir has said, that we have done the offline journey, and now it's time to go digital. So as the next stage is also digital, we are going to enter the markets through online strategies, and then we are also going to do our own marketing team. So we are going to fully utilize our potential in the marketing field, and we are increasing our capacities as we are going to the next scale. So that's one of the few factors we are going to use for it. Right, so great to know. And for the last question, is there anything that you'd like to leave our young entrepreneurs with? Any suggestions? Because aapka 10 saal ka journey hai, so you have all the experiences in the world. I'm also a young entrepreneur, so I don't have much, but I'll say the things that the older says to me, that patience and knowledge and the willpower to never give up. That are the main things that any entrepreneur should have. The will to take risk and have the gut power and to never give up. That is one of the things that will make you succeed. With time, it will take time, but it will make you succeed. Knowledge, willpower, and patience, and the will to succeed is what we come with the end to the episode. This was the conversation with the founders of Golechha Bioscience Pvt Limited. We sure to learn a lot from the company's journey and are leaving with great insight. Thank you so much, sir. It was an honor to have you. It was a pleasure, ma'am. Thank you so much. Thank you.
Bye.